ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धि सचन्द्रं षड्रिपुमतसकतं बाधिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरागातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत महापुराण को। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर को वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सदा जय आज बनी यहर का समक्ष में पंचम स्कंद को 23वां अध्याय को पाठ आरंभ होन गइरहेको छ। यहाँहरूको मन भगवान का चरणारविन्द में सदा सर्वदा लागिरहोस्। यी भगवान का वाणीहरू श्रवण गरेर भन्दै अब पाठ आरंभ गरिन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोविंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णोः परमं पदम् अभिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुव अवतानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः स बहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीवीनाम् आजीव्य उपास्ते तस्यानुभाव उपवर्णितः। स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रह नक्षत्रादीनाम् अनिमिषेण व्यक्तरमसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवापष्टम्भ ईश्वरेण भीतः सस्वत् अवभासते। यथा मेढिस्तंभ आक्रमण पशव संयोजितः त्रिभिर्भिः सवनैर्यथाधानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन्नन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोद्दीर्यमाणः आकल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति। नवसि यथा मेघा सेनादयो वायुवशः कर्मसारथया परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति। केचनैतज्ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम् अनुवर्णयन्ति। यस्य पुच्छाग्रे वाक्शिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितः तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले दाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः। तस्य दक्षिणावर्तकुण्डलीभूतशरीरस्य यान्यूदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सभ्ये। यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति। पृष्ठे त्वजवीथि आकाशगंगा चोदरतः पुनर्वसु पुष्यो दक्षिणवामयोः श्रोणियोरार्द्राश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजित् उत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर्यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठामूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मगादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववङ्कृषु युञ्जित। तथैव मृगशीर्षादीन्युदगयनानि दक्षिणपार्श्ववङ्कृषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत। शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्निषेध। उत्तराहना भगस्ति रथराहनो यमो मुखेषु चाङ्गारकः शनिश्चरौ उपस्थे बृहस्पतिः ककुति भक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यम् उशना स्तनयोरस्मिनौ बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे दारागणाः। एतद्वहैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपमहरः सन्ध्यायां प्रयतो भाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठित। नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषाय विधीमहीति। ग्रहरक्षतारमयमाधिदैविकं पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालं
नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं न सेत तत्कालजमासुभावं ग्रहरक्षतारमयमादिदैविकं पापापहं मन्त्रकृतं त्रिकालं नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं न सेत तत्कालजमासुभावं हरि ओं तत्सदिति श्रीमदावधे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे शिशुमारसंहितावर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भक्तवत्सल भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ को, आज को आनंद को, जय जय श्रीमन्नारायण।